Yeah, so many things have this thermometric property that I can rely on, that I can ask, I can check to see what the temperature is. So these things sense the temperature through their property, and I look at that property and I'm like, okay, this is the change in temperature. So that is how we use. So for example, if we have a mercury in glass thermometer, so that is basically a glass tube that has mercury in it, a small amount of mercury, and you take the mercury in glass thermometer, then what it does is that it has a mass, fixed mass of mercury that is trapped in the tube. Okay. So fixed mass of mercury in there. And what happens is that when you heat it, mercury expands, the volume changes. Okay. So there's a change in volume of mercury. And based on how much change there is, I can be like, okay, if the change is this much, the temperature is 0. If the change is this much, the temperature is 100. If the change is this much, the temperature is 150. If the change is this much, the temperature is 87. So based on how that change in volume happens, I can easily figure out that what exactly is the temperature. Same for alcohol. You can also have alcohol in glass thermometer, and that will do the same thing. There's a fixed max of alcohol in there, which will expand, which will contract, the volume will change, and based on that volume, I can figure out how much temperature is. This thing, the thing that is changing, this thing, we call it thermometric property. This is the thermometric property that will change and that will tell me how the volume changes. So we use ratio method all the time. So for example, we are like, okay, when the temperature is, let's suppose I assume, okay, this is my basic temperature. I say, okay, 0 degrees Celsius. Okay. So 0 degree Celsius से अगर 100 degree Celsius पे जाते हैं, so अगर हम इतना change करें, so if the change is of 100 degrees, the length of this mercury thing is 15 centimeters. So I'm saying, okay, ये मेरे पास mercury in glass thermometer है. There's a mercury in there. When I heat it to 100 degrees, तो 100 degrees पे जाके 15 centimeter उसकी length बनती है. So what am I doing? I'm not taking the volume, I'm taking the length now. So this is my length, the change in length, and this is the change in temperature. I'm like, okay, when the change is from 100 to 0, the change in length is 15. If I have a temperature that is unknown from the starting value, what is, and my length is over here, let's suppose 7.5 centimeters, then what is the temperature? So this is basically the way that we do it. We compare the change in temperature to the change in length in a mercury in glass thermometer. If you don't have the length, you can also do it with metals. That is called a resistance thermometer. So metals, they resist how much energy transfers through them. So if they're hot, the resistance is different. If they're cold, the resistance is different. So we are like, okay, we'll take a metal and it has a fixed volume or whatever, but it has a changing resistance. So now I'm going to take the change in temperature and I'm going to compare with the change in resistance. So I'm like, okay, पहले तो मैं basic temperature देख लेता हूँ. मेरे 0 degree से लेके 100 degree के अंदर resistance में कितनी change आती है. So let's suppose that comes out to be 400 ohm. Ohm is the unit of resistance. So then I'm like, okay, if my temperature is T, and I do not know what that is. So from T to 0, the change in 250 ohms. So I'm like, okay, if this is 100, changes it by 400, then T will change it by 250, cross multiply, and you'll get 250 over 400 times 100 equals to my temperature. So that, whatever that comes out to be, that comes out to be 4, 6 are 24, and 4, 2s are 8, and 62.5 degrees. There you go. आपको एग्जाम में वो क्या करता है, वो आपसे कहता है कि देखें पहले तो आपको ये 100 और 0 कहाँ से मिले, हाउ डू यू नो कि 100 है और 0 है, हाउ डू यू नो दैट. तो उसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका है कि देखें जी 100 और 0 हमें यहाँ से मिलेंगे, वी हैव दीज फिक्स्ड पॉइंट्स. तो जब भी आप कोई भी चीज पकड़ते हो, आपने मर्करी ले लिया, आपने अल्कोहल ले लिया, आपने मेटल ले लिया, कोई भी चीज आपने पिक कर लिया, यू फर्स्ट नीड टू, द ट्राइंगल मीन्स चेंज. So triangle R means change in resistance. Triangle T means, triangle is basically called delta. So delta T means change in temperature.
तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले फिक्स पॉइंट्स लेते हैं. फिक्स पॉइंट्स कैसे हमें मिलेंगे? सो वी टेक एनीथिंग जिसकी बेस पे हमने फिक्स पॉइंट्स लेने. सो यूजुअली वी टेक आइस. तो लेट्स सपोज आपने आज अपना स्केल बनाना है, तो यू टेक फिक्स्ड आइस. उस आइस को आप एक बीकर में रखते हो. सो आइस क्यूब है, बीकर में रख दिया हमने. एंड आई हैव माय न्यू थर्मोमीटर दैट हैज नॉट बीन ग्रेजुएटेड. ग्रेजुएटेड का मतलब होता है कि उसके ऊपर ये लाइंस लगी हुई हैं मेजर करने के लिए, वो नहीं है इसके ऊपर. मैं इसको इसमें इमर्स कर देता हूँ. दिस आइस दैट इज मेल्टिंग, obviously it's pure water that is pure ice that is melting, so there is no change in temperature. तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि अच्छा मर्करी यहाँ पर था और मर्करी इस लेवल तक राइज किया है. So I'm like, okay, this is going to be my 0. Then I take the same thermometer and I put it in boiling water. So I'm heating this thing. This is boiling. And I put the same thermometer in here. And now, because it's boiling, the mercury rises to a certain level, like यहाँ तक rise कर जाता है. तो मैं कहता हूँ, okay, ये मेरा 100 है, ये मेरा 0 है, because यहाँ पे ice थी, ये मेरा 100 है. मैंने fixed points ले लिए. So सबसे पहले आपने fixed points लेने हैं. Okay, fixed points ले लिए. अब आपके पास thermometer आपने देखा. You have this thermometer in which you have a mark for 0 and you have a mark for 100. Now you're like, अच्छा मैं अब इसको divide करूँगा. So you're like, okay, I'm going to divide it in 100 small portions. So 1, 2, 3, 4, all the way to 100. You divide it into small portions. Now all of these are basically, if the mercury moves by 1 point, then that means it has moved by 1 out of 100. Similarly, if it moves by 5 points, then you're like, okay, this is 5 out of 100. And that is why in Celsius, we take this as 5 degrees, that it is 5 degrees out of 100, that we have defined our fixed points. This is your fixed point 1, and this is also your fixed point. So you have two fixed points. Yes, Ahmed? Sir, what if an object doesn't boil on Ahmed, 100? what's your question? You can unmute yourselves if you have any questions. Sir, what if what if an object doesn't boil on 100? I can't hear you. What if something doesn't boil at 100? Yeah, that is a good question. So the only reason we were able to take 0 and 100 here was because we were taking water or ice. If we had something that did not boil at 100, then we will take जो भी उसकी value होगी. But the thing you have to remember is कि आपकी मर्जी आप उसको क्या value दें. आप कहते हो कि जी आज से मैं जो scale बना रहा हूँ, इस scale का नाम है you can call it anything that you want. My scale is I don't know, give me a cool name. Okay, my scale just has a name. I'm going to call it the British scale. Okay, so this is a British scale, and this scale has a fixed value, the starting value, और वो starting value है -20. मैंने अपनी मर्जी से उसको starting value -20 देती है. अब इसका मतलब है कि अब उस स्केल के मुताबिक, okay, so I have a scale of flames. Thank you for the name. So we have a scale of flames, and this scale, the starting value is when water को छोड़ दें, हम कोई pure चीज ले लेते हैं. We take something like, okay, I have pure aluminium, and I'm going to be like, अच्छा pure aluminium कब melt करता है? So अब उसको हमने value दे देनी है कि आज से जी ये -20 है. So this is the melting point of pure aluminium. हमने अपनी मर्जी का किया ना, so ये -20 हो गया. Similarly, then I take that same aluminium and I boil it. I'm like, okay, जहाँ भी boil करेगा उसको मैंने 500 बोल देना. Okay, so ये boil कर गया. अब उसके बाद मैंने उनके बीच की सारी डिग्रीज को उस तरह से डिवाइड करना. मेरी मर्जी है मैं कितने का डिवाइड करूँ. मैं कहता हूँ जी 5 का डिफरेंस होगा, मैं कहता हूँ जी 10 का डिफरेंस होगा. It's totally my choice. लेकिन अब क्या होगा, एल्यूमिनियम इज जस्ट वन थिंग. जहां पर एल्यूमिनियम का यूज नहीं है, लेट्स सपोज वाटर है, वाटर तो बहुत पहले बॉयल हो जाएगा, तो वो इस स्केल पे हो सकता है कि -3000 हो या -350 हो या व्हाटएवर, कि वो इतने कम टेम्परेचर पे वाटर बॉयल कर रहा है, क्योंकि मैंने स्केल अपनी मर्जी से डिफाइन कर दिया था. सो जब भी आप स्केल बनाते हो, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि आप किस लिहाज से उसको बनाए. व्हाट इज योर स्टैंडर्ड थिंग. सो फॉर एग्जांपल इन द केस ऑफ सेल्सियस इट इज वाटर, कि वाटर हर बंदा यूज करता है, वाटर इज
available everywhere on the world, wherever humans are, wherever they might need to measure it, where they might need to make a thermometer. So इस वजह से people prefer water. लेकिन अगर आपने scale of flames के लिए aluminium pick कर लिया, so what was the first thing you did? The first thing you did was you picked a material that responded to some change. So आपने material ले लिया aluminium. Celsius में उन्होंने water ले लिया. Then you took two fixed points. So in the case of aluminium, there were its melting point and boiling point. In the case of Celsius, it was also its melting point and its boiling point. The third thing that you did was you made divisions. अब आपने देखा कि हमने scale of flames में हमारे melting point -20 था और boiling point 500 था. In the case of Celsius, हमने उसको 0 और 100 बोल दिया. Very convenient, right? Similarly, हमने उसको divide किया. इसको मैंने divide कर दिया जी 520 divisions में. इसको मैंने डिवाइड कर देना 100 डिविजन्स में. सो अब मैंने इसको 100 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया. सेल्सियस एक साइड पे हम चेक कर रहे हैं, स्केल ऑफ फ्लेम्स हम इस साइड पे चेक कर रहे हैं. सो दिस इज स्केल ऑफ फ्लेम्स एंड दिस वन इज सेल्सियस. ओके, सो आई हैव दीज डिविजन्स. अब मेरे पास एक फिक्स चीज आ गई है. मुझे पता चल गया है कि देखें जी, जब आपके पास इतना डिफरेंस आता है तो इतनी डिविजन हैं. अब मैं उस लिहाज से उसको देखूंगा. आई विल टेक द रेशियो मेथड एवरी टाइम आई नीड टू मेजर टेम्परेचर. कि अच्छा जी, यहाँ पर वी आर टेकिंग मेजरमेंट ऑफ एल्यूमिनियम. सो इफ देयर इज द चेंज इन एल्यूमिनियम्स लेंथ कंपेयरिंग टू चेंज इन टेम्परेचर, हम उसको रेशियो मेथड अप्लाई कर देंगे. सेल्सियस में भी यही होता है. हम कहते हैं जी कि चेंज इन लेंथ ऑफ मर्करी है और उसको हम टेम्परेचर से मेजर कर रहे हैं क्या. और दैट इज हाउ यू मेजर, यू मेक अ स्केल and you can easily measure temperature. लेकिन इस सब में देखें, the first and most important thing was this was a pure substance. You can't just have a random thing which is impure and be like अच्छा आज से मैं दूध को देख के स्केल बनाऊंगा. You can't, because जो आज आपने दूध लिया है कल वाला दूध उससे बहुत different होगा. You are not getting a pure substance. It will not have a fixed value. So you need a pure substance. Secondly, you need a substance that gives some change based on temperature. अगर वो temperature को respond ही नहीं करता तो how can I even measure कि वो क्या उसका melting point है, क्या boiling point है. But of course everything does that. Everything has a melting point and boiling point. It's just a matter of कि आपने scale use कहाँ पे करना है. Obviously, if I am going to use it for daily life, this scale of flames will be very bad because the melting point and boiling point of aluminium is so much higher than all the temperature we use in daily lives. But with water it's really easy because water के लिए सारे जो temperatures हम Celsius scale के हैं वो हमारी daily life में काफी use होते हैं. ठीक है, so that is why we prefer this. अब ये हो गया, हमने scale बना लिया. ठीक है, making a scale. Any question on this? So whenever you want to make a scale, you first think something that a pure substance that you're going to pick, then you're going to pick its two fixed points, then you're going to divide those into anything that you need. Next thing is making a thermometer. Thermometer में obviously the first thing you need is again a substance. अब आपने scale बना लिया हुआ है, but आपने एक substance लेना है, वो material आपने pick करना है, which will respond to heat. So for example, it can be mercury, it can be two metal wires. ठीक है, कोई भी आप metal wires ले लेते हो, आप कहते हो copper और iron की metal wire ले लेनी है मैंने. ठीक है, so I'm going to give you example of these two. Alcohol को भी देख लेते हैं. So you have alcohol as well. Next thing you need is two fixed points. अब ये fixed points कौन से होंगे? आपके scale वाले fixed point होंगे. बस आप देखोगे कि वहां पर mercury क्या कर रहा है. So for example, in the case of mercury in glass thermometer, आपके पास एक mercury का column है. You're like अच्छा 0 पे इसकी length क्या है? तो पता लगता है जी 0 डिग्री सेल्सियस पे इसकी length है 1 सेंटीमीटर. और मेटल वायर्स में आप देखते हो वोल्टेज. ठीक है, आप इनकी वोल्टेज देख रहे हो. ठीक है, आप देख रहे हो कि किस चीज को चेंज करना है मैंने. तो इन द केस ऑफ, सो दिस वाज द प्रॉपर्टी आई मिस्ड आउट ऑन. सो इसमें दिस इज अ चेंज इन लेंथ, इसमें दिस इज अ चेंज इन वोल्टेज, दिस इज आल्सो द चेंज इन लेंथ. लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम दोनों कह सकते हो आप कहते हो अच्छा जी 0 डिग्री सेल्सियस पे वोल्टेज है 2 वोल्ट्स और अल्कोहल में जी 0 डिग्री सेल्सियस पे लेंथ है 3 सेंटीमीटर्स. ओके, नेक्स्ट वाला एक हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या है. तो 100 डिग्री सेल्सियस पे मर्करी की लेंथ लेट्स सपोज आ जाती है
12 centimeters. तो you're like, okay, I have my fixed points. मेटल वायर में आप कहते हो अच्छा 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या चेंज आ रही है, तो पता लगता है जी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे चेंज आ रही है 10 वोल्ट्स की. एंड इन अल्कोहल देयर इज नो चेंज. 100 डिग्री सेल्सियस पे अल्कोहल हैज बॉइल्ड, so there is no change that you can see. What does that mean? That means alcohol in glass thermometer is not good if you want to measure the 100 degree Celsius temperature, क्योंकि वो तो बॉयल हो गया होगा तब तक. उसका boiling point is much less than 100. It's 78 degrees Celsius. So alcohol is not useful for high temperatures like that, but the other two are. तो अब आप उनको देख लेते हो कि अच्छा मुझे पता चल गया कि इतने पे इतना चेंज करता है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 100 से 0 पे टेम्परेचर जाए तो इसमें लेंथ का चेंज आता है 11 सेंटीमीटर्स का. इसी तरह अगर इसमें 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आए तो इसमें वोल्टेज का डिफरेंस आता है 8 का. अब आपके पास फिक्स्ड वैल्यूज आ गई हैं. अब आप इस रेशो को यूज कर सकते हैं. दिस इज योर स्टैंडर्ड रेशो. एवरी टाइम यू टेक इट यू आर लाइक ओके, आज आपको कोई आ कहता है यार मेरे पास मर्क्यूरी ग्लास थर्मोमीटर जो आपने बनाया था वो है और उसमें लेंथ इज 8 सेंटीमीटर्स, तो मुझे बताओ कि उसकी टेम्परेचर क्या है. तो आप कहोगे अच्छा देखो मुझे देखने दो. व्हेन द लेंथ इज 0, तो व्हेन द लेंथ इज 1 सेंटीमीटर तो वो 0 होता है. व्हेन द लेंथ इज 12 सेंटीमीटर्स तो वो 100 होता है. तो आप कह रहे हो कि अच्छा वो 8 पे है, 8 सेंटीमीटर्स पे क्या टेम्परेचर होगा मुझे नहीं पता, अभी देख लेते हैं. तो आप कहोगे अच्छा देखो व्हेन द डिफरेंस इज ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर कंपेयर टू चेंज इन लेंथ, ये दैट्स व्हाट वी आर डूइंग. तो व्हेन द डिफरेंस इज ऑफ 100 द लेंथ इज 11 सेंटीमीटर्स. when the difference is of 7 centimeters now, not 8. क्यों? क्योंकि start ही आप 1 centimeter से कर रहे हो. So when the difference is of 7 centimeters, the temperature is x. So x comes out to be 7 times 100 divided by 11, whatever that value comes out to be. So वो 63.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. इसको एक फॉर्मूला भी आपको बुक वाले देते हैं. वो कहते हैं जी x minus x naught over x 100 minus x naught times 100 degree Celsius. ये क्या है? This is nothing but another way of writing the same thing. What is x naught? This is your starting value, the 0 degree वाली value. ठीक है, जो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर थी. और x 100 क्या है? This is your 100 degree Celsius वाली value, the ending value. And what is this value? This is what you want to figure out, your required value. तो अगर आपके पास लेंथ है तो आप लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कर देते हो. अगर आपके पास वोल्टेज है तो वोल्टेज माइनस ओरिजिनल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल वोल्टेज कर देते हो. So this is all just ratio method that you can use regardless of what thing you are measuring, and that makes life so much easier. So whether it is a two metal wires with their changing voltages or mercury in glass and all that, so things are pretty easy based on this. अब अगली चीज, there are 3 terms that we usually use in response to whenever we want to check how good a thermometer is. First is linearity, second is responsiveness, जिसको हम सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, ठीक है, एंड थर्ड इज रेंज. ठीक है, सो इसको हम सेंसिटिविटी भी बोलते हैं एंड थर्ड इज रेंज. I'll start with the simplest one, range. Range is how big or small values you can measure. So for example, if you have a scale that is based on water, then if you're using water in there, so 0 degree Celsius पे water freeze कर जाएगा, 100 पे boil कर जाएगा. ना आप 0 measure कर सकते हो ना 100 measure कर सकते हो exactly. तो आपकी range है 100 minus 0 100 degree Celsius की. लेकिन अगर आपके पास मर्क्री है तो मर्क्री बॉयल करता है 300 प्लस पे और वो फ्रीज करता है नेगेटिव वैल्यूज में जाके कहीं पे. तो दैट मीन्स आपकी रेंज काफी बड़ी है. आप जब तक वो बॉयल नहीं करता तब तक का कोई भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हो और जब तक वो फ्रीज नहीं होता तब तक का कोई भी टेम्परेचर उससे मेजर कर सकते हो. सो मर्क्यूरी इज अ वेरी यूजफुल थिंग फॉर दैट. इफ यू टेक अल्कोहल एज वी हैव सीन ऑलरेडी, तो अल्कोहल 78 पे बॉयल कर जाता है, तो मैं 78 तक का टेम्परेचर उससे मेजर कर सकता हूँ, 80 डिग्री सेल्सियस मेजर नहीं कर सकता बिकॉज इट्स आउट ऑफ माई रेंज. सो योर range is always the biggest value you can measure minus the smallest value you can measure. So that is usually the temperature at which anything boils or freezes. तो उन दोनों का डिफरेंस हम देख लेते हैं कि अच्छा यार कितना ज्यादा डिफरेंस इन टेम्परेचर में मेजर कर सकता हूँ.
I have a thermometer that can only measure 4 degrees, उसके बीच में मेजर करता है, तो वो एक बहुत इनएफिशिएंट थर्मोमीटर है फॉर मोस्ट केसेस। ठीक है, एक तो ये चीज होगी कि कैन माई मटीरियल अलाउ मी टू मेजर लार्ज वैल्यूज और लार्ज डिफरेंसेस इन वैल्यूज कंपेयर टू स्मॉल डिफरेंसेस। सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि हाउ मच डज द थिंग चेंज, व्हाट इज द change shown if there is small change in temperature. Let's suppose you're taking a mercury glass thermometer जो कि बहुत पतला सा है, बहुत पतली सी उसकी लेंथ है, ऐसे बहुत पतली सी है। Compare that to a mercury glass thermometer that is very wide. अब दोनों में एक जितना मर्करी है, इसमें भी एक जितना मर्करी है, इसमें भी एक जितना मर्करी है। अब मैं इसको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कराता हूँ टेम्परेचर, तो ये मर्करी यहाँ से, मतलब ऑब्वियसली ये 0 है, ये 100 है, तो ये इतना ज्यादा मर्करी है, इसने 100 तक जाना है, तो ये यहाँ से हो सकता है कि बस इतना सा जाए। सो दिस इज माई चेंज दैट आई सी। बट ये वाला चूंकि बहुत पतला सा और लंबा सा है, तो हो सकता है कि 1 डिग्री के लिए यहाँ तक वाटर उठ के आ जाए, क्योंकि वो पतली चीज के अंदर चीजें ज्यादा आगे को जाएंगी। ठीक है ना, इट हैज अ स्मॉलर बोर, इसको हम कहते हैं इट हैज अ स्मॉल बोर। बोर मतलब द होल इन विच द मर्करी हैज टू ट्रैवल इज स्मॉल, सो दैट मीन्स फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर वो थोड़ा सा ज्यादा आगे वैल्यू जाएगी, तो मुझे नजर बहुत डिटेल में आएगा। ठीक है दोनों में एक जितना फर्क, लेकिन इसमें चेंज इन लेंथ और इसमें चेंज इन लेंथ फर्क है, तो दिस वन इज मोर सेंसिटिव बिकॉज हल्की सी चेंज होती है तो ये बहुत आगे को जाता है, मुझे डिटेल में वैल्यू नजर आती है। दैट मीन्स अगर मैं हाफ डिग्री का भी चेंज करूंगा तो मैं ऊपर वाले थर्मोमीटर में ज्यादा अच्छे से उसे देख सकता हूँ, नीचे वाले में उतने अच्छे से तरीके से देख नहीं सकता। द थर्ड थिंग इज लीनियरिटी। लीनियरिटी का मतलब ये है कि इट शुड बी predictable, it should be in a reasonable uniform change, so the change must be uniform। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि अगर मैं कहता हूँ ना कि 100 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस में 15 सेंटीमीटर का फर्क है, तो 50 डिग्री सेल्सियस के डिफरेंस में 7.5 का फर्क आना चाहिए, बिकॉज वो टेम्परेचर हाफ किया तो ये भी हाफ होना चाहिए। मैं 200 डिग्री सेल्सियस कर दूं तो चेंज 30 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये मेरे पास यूनिफॉर्म स्केल है कि जितनी चेंज आती है उसी लिहाज से दूसरी चीज भी चेंज होती है। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड आई हैव समथिंग लाइक के देखें, आप 50 डिग्री से जितना ज्यादा टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे लेट्स सपोज 7.5 है, तो 100 पे पता लगता है कि वो 21 पे चले गया, क्योंकि जी आपने टेम्परेचर ज्यादा किया तो चेंज भी ज्यादा आया। दैट इज नॉट अ बैड स्केल, बट इट इज नॉट यूनिफॉर्म, इट्स नॉट लीनियर। अच्छा आप कहते हो जी 200 के चेंज पे वो और ज्यादा फर्क डालेगा, तो 200 के चेंज पर पता लगता है कि वो डबल होने की बजाय वो ट्रिपल हो जाता है, वो 63 सेंटीमीटर पर चले जाता है। सो दैट मीन्स कि फॉर एवरी इंक्रीज इन चेंज दैट आई मेक, वो उतना ही ज्यादा चेंज मुझे ज्यादा दे रहा है, तो दिस इज नॉट लीनियर। क्योंकि अगर आप देखो तो जब मैंने इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया, जब इसको डबल किया तो ये भी डबल हो गया, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर डबल कर रहा हूँ ये भी डबल हो रहा है। यहाँ पे मैं टेम्परेचर तो डबल कर रहा हूँ लेकिन ये 3 टाइम्स चला गया, उससे भी थोड़ा सा कम। और जब मैं इसको डबल कर रहा हूँ तो ये भी 3 टाइम्स जा रहा है, ये 2 पॉइंट कुछ टाइम्स जा रहा है, 2.8 टाइम्स है लेट्स सपोज, और ये 3 टाइम्स जा रहा है। तो माई स्केल इज नॉट यूनिफॉर्म, देयर इज अ वेरिएशन इन दैट, कि इस साइड पे तो मैं डबल कर रहा हूँ लेकिन इस साइड पे वो या तो एग्जैक्ट 3 टाइम्स जाए, वो 3 टाइम्स भी नहीं जा रहा है, कभी वो कम जा रहा है कभी वो ज्यादा जा रहा है, तो that is not linear। Whenever we are measuring scales, whenever we are making thermometers, it depends, do we want linearity or not, do we want high responsiveness or not? For example, if you are measuring human body temperature and you want a thermometer that is used in clinics, then you don't want a thermometer that has a big range, क्योंकि आपको तो रेंज चाहिए जितनी रेंज में इंसान जिंदा रहता है, आपको 60 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए क्योंकि उस वक्त इंसान जिंदा रह नहीं सकता। ठीक है, आपको रेंज चाहिए है जितनी रेंज में इंसान की बॉडी का टेम्परेचर रहता है। सो लेट्स सपोज हम कह लेते हैं कि अच्छा जी 37 डिग्री सेल्सियस इज द एवरेज टेम्परेचर, सो इट गोज अप टू 43 एंड गोज डाउन टू 31, लेट्स सपोज ये। तो अब अगर एक थर्मोमीटर मुझे 15 डिग्री सेल्सियस बता रहा है, सो दैट्स नॉट
any use to me. I don't need it. I just need a range that is between what my application is. So मुझे बहुत बड़ा वैल्यू मेजर करने की जरूरत ही नहीं है. मुझे क्लिनिक में जो थर्मोमीटर यूज करते हैं, they have a small range because they only measure the range in which people survive. But I need it to be responsive. I need it to be sensitive. क्यों? आई वॉन्ट कि ये मुझे हल्की सी भी चेंज आए ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर में, हाफ डिग्री का भी फर्क आए, तो मुझे उस पर अच्छी तरह से नजर आना चाहिए वो. कंपेयर दैट टू अ थर्मोमीटर दैट आई यूज इन किचन, देन अगर वो 2 डिग्री का भी फर्क आ जाता है तो आई एम नॉट रियली कंसर्न विद इट. सो मुझे बहुत ज्यादा सेंसिटिव थर्मोमीटर किचन में नहीं चाहिए, लेकिन ह्यूमन बॉडी का मेजर करने वाला मुझे चाहिए. ठीक है. So I need a good sensitivity for clinic thermometer, but not for the one I use in kitchen. But in the kitchen, I need a good range. I need to be able to measure things that are freezing. I need to be able to measure the things that are boiling. Similarly, linearity, that is something I would like in all of my scales, because that is going to make it predictable for me. Linearity कई दफा हमें नहीं चाहिए होती. For example, the fuel tanks in cars, they are not linear. जब आप full करवाते हो और let's suppose वो आधा होता है, तो the difference in that is much faster compared to when you have something other, like when you have a scale, when it goes down, तो जैसे जैसे कम होता जाता है वैसे वैसे वो आपके पास linearity ना होने की वजह से उसका फर्क आता जाता है. हम मीटर्स को पढ़ेंगे तो तब मैं आपको उसकी डिटेल भी दिखा दूंगा. ठीक है. सो फॉर जब वो फुल होता है तब वो जल्दी नीचे गिरता है, और जब वो बिल्कुल एम्प्टी होने के पास होता है तब वो स्लोली नीचे गिरता है. दैट इज समथिंग दैट आई वांट, दैट इज गोइंग टू हेल्प मी आउट, क्योंकि इट्स नॉट लीनियर. But in measuring thermometers, most of the time we want linear things. There are two main kinds of thermometers. One was thermocouple, one is thermometer जो कि liquid in glass होता है. Liquid in glass हमने देख लिया. Thermocouple में अभी आपको बता देता हूँ. What you do is you take two different wires. एक वायर आप लेते हो और दूसरी डिफरेंट वायर होती है. इन वायर्स को आप ज्वाइन कर देते हो एक वोल्ट मीटर से. ठीक है. ऐसे ये वायर्स ज्वाइन कर दिया हमने. ये एक मेटल है, सो दिस इज मेटल 1 एंड दिस इज योर मेटल 2. एक साइड पे मैं उसको बेसिक, लेट्स सपोज ये आइस है, आइस में डाल देता हूँ. ठीक है. अब उससे क्या होगा कि ये मेरे पास एक मेटल है, ये दूसरी मेटल वायर है, दो डिफरेंट वायर्स हैं. ठीक है. ये मेरे पास मेटल 2 है, वो मेटल 1 है. अब उससे होगा क्या कि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस के वक्त एक खास वोल्टेज आएगी, और यहाँ पर मैं उसको डाल दूंगा जिस भी चीज़ का मैंने टेम्परेचर मेजर करना है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज समथिंग दैट आई मेड एंड आई वांट टू मेजर कि इसका टेम्परेचर क्या है. तो द डिफरेंस इन वोल्टेज इज व्हाट आई विल नीड. So whenever you connect two metals that are of different metals and they are connected in different temperatures, they create voltages. And the change in voltage tells me कि अच्छा ये कितना ज़्यादा temperature हुआ है, कितना कम temperature हुआ. So that is the way to use thermocouple. इसकी ज़्यादा detail आपके syllabus में नहीं आती. You just need to remember how to use ratio method whenever we are measuring temperature.